Good evening, everyone. Sorry, logical evening, everyone. Well, this is me again. Sir नहीं है, मैम मैं आज. A logical evening to everyone. So I hope logical evening, Rangoli. Logical evening, Mahek. Logical evening, Khushi. I hope you enjoyed the mock today. It was specially curated for you. और एंड आई रियली होप कि इस बार आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर रहा है बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई कैन मेक आउट 90% of you are unable to do well on certain sections because you're not comfortable with time management, or rather you forget the time management aspect of it. Logical evening, Kratika, Abhishek, Sanskriti, Anmol, Abhishek, Joshi. हाँ, सो करें शुरू अभी एनालिसिस. नाउ बेसिकली आपको पता है 3 VIOMs होने वाले हैं, उसमें का ये पहला वाला है मॉक 2265. सो टुडेज इंग्लिश अगर मैं सेक्शन देखती हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, so basically it was from moderate to difficult side. कुछ एक आध दो पैसेज थे जो थोड़े से डिफिकल्ट तरफ आ रहे थे, बट बाकी के जो पैसेजेस थे वो they were something that you have already done. Climate change पता है, नींद में भी पता है, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी ये सारे पता है, करंट अफेयर्स ये सारे आपको पता है. जहां इशू आया होगा वो सिर्फ दो पैसेजेस में आया होगा, बट व्हेन यू सिट डाउन टू रीड इट एंड सॉल्व इट दे वर नॉट रियली दैट डिफिकल्ट. बट यस, इनिशियली टू रीड it would have taken slightly more time. Now, of course, we have it's a part of Gladiator series, and everyone is a part of it. And you know the high points of this of this particular series, Gladiator. अभी दिल्ली दूर नहीं है और दिल्ली को फतह करना है. You have to win, right? So hence the Gladiator series. चलो, let's look at, you of course have the current affairs magazine, and then we have the current affairs questions based GK cracker, and we are starting off this with this particular thing. Now this particular passage would have been towards the moderate side. ये moderate side वाला था, ठीक है. If I sit down to read it and all, it is basically art and history and politics. It's a combination of that particular field. आर्ट के बारे में बात हुई है, बट आर्ट की सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, सोशियोलॉजी आ जाता है, एंड देन यहाँ पे वो पास्ट में क्या हुआ उसका रेफरेंस देते हैं. तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड आउट हियर. नाउ दिस इज बेसिकली moderate one, and as usual अगर carefully आपने पढ़ा होगा one shot में, it should not have taken to read and finish solving this particular passage should not have taken more than 4 minutes, maximum 4 minutes. इसका acceptable score जो रहेगा that will be 5 on 5, 4 on 4, और at the most 4 on 5. अगर हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर पैसेज के क्वेश्चंस देखते हैं, दे आर डेफिनेटली नॉट ऑन द डिफिकल्ट साइड. पढ़ने में जरूर रहा होगा आपको the first line that you read, that it is almost as safe to assume that an artist of any dignity is against his country. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा initially it would have been more of a shock kind, like what is it talking about? But when you read further ahead, it's not all that difficult. ठीक, let's go to the next the questions. Now this is one particular question जिसमें आपको एरर का कहीं स्कोप ही नहीं था, तो ये तो पर्टिकुलरली आपका करेक्ट होना ही था.
Now, if I look at the passage, it actually is beginning. It's beginning with an artist of any degree dignities against his country. वहां से शुरू कर दिया उन्होंने. Then they are going on to talk about less fitted to prosper and all, to take criticism of life and all. So ये context देखते हैं तो ये definitely दांते के बारे में नहीं बात हुई है. दांते जो है ये as an example quote किया हुआ है. Right? Ki the author has used Dante as a supporting idea for his main point. Okay. Then artist against countries, इस पे आपको doubt हो सकता है. Then theories on artists नहीं है, ये भी quite clear था. It's not theories on artists के kind में. So ज़्यादा confusion हो सकता है B and C में. Now, if I look at this, is the passage completely, talking about how artists are against the country, or it is talking about how artists are able to relate to the environment around them? Like अगर first passage के context में देखते हैं, so he is a delicate fellow. He takes artistic endeavor, which is at once a criticism of life and an attempt to escape from life. Then it's looking at who was not actively hostile to his environment. और फिर दांते का आया. So basically, it is not necessarily, that artist is against the countries, but yes, उसका जो connotation है artist against the countries का, जो जिस context में use किया उसका meaning आगे देखते हैं, तो we are looking at the kind of relations that the artist has with the society. Hence, answer is going to be C. I hope everybody got it correct. तो ये 1-on-1 हो गया है. एक सॉल्व किया, एक करेक्ट है. सबका करेक्ट है ना? 2. Which of the following is true about artists as per the passage? Now, if I look at the first one, which says he reacts sharply to situations which at most annoy people. It's a possibility, definitely, huh? B, in general, artists are not actively hostile to their environment. अब can this be true as per the passage? इसके ऊपर question लगा हुआ है. तो answer can be either A, B, both A and B, or neither A nor B. Right? अब इस particular चीज के लिए हम देखते हैं. So passage में बात हुई है that he differs from the rest of us mainly because he reacts sharply and in an uncommon manner to phenomena which leave the rest of us unmoved or at most merely annoy us vaguely. So basically, A का तो mention आ रहा है. A has been mentioned. So if I look at this one, that in general, artists are not actively hostile, that's basically no mention of this anywhere. Hence, answer is going to be A. So this is 2 and 2 so far. और अगर आपका टाइटल इनकरेक्ट हुआ है, so टाइटल आपने अगर B टाइटल लिया है, so you have just taken the supporting point of the author, which says that it is almost as safe to assume that an artist of any dignity is against his country as it is to assume that his country is against the artist. आगे का पार्ट भी पढ़ना है ना. अगर आर्टिस्ट कंट्री के अगेंस्ट है तो कंट्री भी आर्टिस्ट के अगेंस्ट है, तो ये दैट कुड हैव बीन अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. बट नो, वो जो कंट्री का रेफरेंस आया है, वो रेफरेंस दिया गया है कि आर्टिस्ट उस सोसाइटी में कैसे रहता है, उसका क्या रिलेशन रहता है, हाउ डज ही रिएक्ट एंड व्हाट गोज ऑन एंड सो फोर्थ. हेंस आंसर कैन नॉट बी बी, आंसर विल बी सी. अगर वहां का ट्रू है, वहां का करेक्ट किया, यहाँ का करेक्ट है, तो इट शुड बी 2-on-2. And frankly speaking, it was not all that difficult a passage. The questions and the options are not at all confusing. Hence, यहाँ तक तो 2-on-2 होना चाहिए. Let's go to the third question. Which of the following can be inferred from the passage? Can I infer that the author is determined to prove his point that artists are fragile beings by hook or crook?
I have a sore throat, so you'll have to excuse me. So by hook or crook तो कहीं prove करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो I can eliminate A. B says the author posits a theory, then disproves the same. Is he trying to disprove it? अगर हम पहले का देखते हैं, बेसिकली जहां भी, सॉरी, ओके, यहाँ भी देखते हैं, सो उसने ये बोल दिया है कि ये डिफर करता है, ये करता है, द मोर फैक्ट्स स्टडी द मोर दे बेर आउट. सो बेसिकली यहाँ पे उसको निगेट नहीं कर रहा है वो, राइट? सो इट कैन नॉट बी disproving the same. B nahi ho raha hai. Now I have C and D. So C says the author posits a theory and then provides historical evidence to prove the same. Lag raha hai. The author prefers artist over non-artist. यहाँ पे कहीं भी author की preference mention नहीं है, ना ही infer कर सकते. Hence answer is going to be C. ये भी again simple था. So it should have been 3 on 3 so far. Fourth one, which of the following figure of speech is used in the underlined part of the passage? Underlined part is piously hated. This was the underlined part. Pious का मतलब क्या होता है? Religious, है ना? Devotional, वो वाला context आता है. और hate जो है, that is negative word. So I have a positive word and a negative word that has been used together. So this is basically an oxymoron. Oxymoron is when I use two opposite antonymous word together to create an effect. तो इस टाइप के तो बहुत सारे यूज करते हैं ना, नेचुरल एक्टिंग. अब नेचुरल भी बोल रहे हो, साथ में एक्टिंग भी बोल रहे हो आप. So that is natural acting. He is faithfully unfaithful to his friend. So faithfully and ईमानदारी से बेईमानी कर रहा है. So these are all examples of oxymoron. Personification है नहीं. अब ये personification आपको पता है, when you treat a non-living thing as a living thing. Metaphor है नहीं, कहीं भी एक implied comparison नहीं हुआ है. An antithesis, that is saying the exact opposite of another, is not there. Right? Now, antithesis is in sentences and oxymoron is in words. So ये पॉसिबिलिटी ये गलत हो सकता था, तो यहाँ पे आता है either 3 on 4 or 4 on 4. This is what your score should be so far. Now, which of the following can be the main idea of the passage? सिंपल सी चीज है ना, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि उस पर्टिकुलर पैसेज का टाइटल क्या है, तो मेरा मेन आइडिया आसपास रहेगा. सो इफ यू गॉट द if you have got the question number 1 correct, there are 99.99% chances that you have got question number 5 correct as well. Unless until आप आलसी हो कि एक पढ़ के लगा मैंने मार्क कर दिया. There have been lots of cases where students come and say I'm unable to get a good score. तो एक दो बार बोला भाई करके बताओ, करके बताया, आंसर B मार्क हुआ. So I said, don't you think C and D, B and D are quite similar? तो कहते अरे मैंने आगे पढ़ा ही नहीं. क्यों नहीं पढ़ा? मेरे को ये करेक्ट लगा तो मैंने मार्क कर दिया. अब ये आलसीपन करोगे तो nobody is going to help you. So you have to read all the options, eliminate, come to 2, and then take an informed decision about that. Now, A says, from Dante to Shakespeare, all great artists had to face the wrath of the society that they were part of. Wrath means extreme anger. तो यहाँ कहीं भी anger of the society की बात नहीं हुई है, so I can eliminate this. B says artists react very quickly to the physical stimuli and hence can be termed as sensitive. Now this is definitely something that is mentioned in the passage. But it is not the main idea. Main idea is that the relation of artist to the society is a very different kind, and it is basically something that makes people believe that artists are against their countries. So they go against the norms wala part aata hai. So this cannot be my main idea, though it is one of the
point that has been mentioned, but it is not the main idea. C says art and artists are inseparable elements. Definitely not. So answer is going to be D. So यहाँ तक I hope you have got 4 on 5, 4 on 4 or 5 on 5. So be a judge of yourself. आपने अपने sheets में mark किया ही होगा. एक बार देखिए and see how you are faring so far. And artists react very quickly to the environment. So यहाँ पे अगर infer कर रहे हो that environment means physical stimuli, then that will be another case. So passage में as it is environment mentioned है. Okay, Chetan, do you have any doubts? Okay, Dhwani, 3 on 4, not bad. Anmol, very good. 4 on 5. Dhruv, 3 on 5. ये थोड़ा सा अभी you need to work on this. 3 on 5 for such a passage and these kind of questions, you can do better. Chetan Ashke, do you have doubt? Yes, in question 2, let's go to question 2. Yes. Okay, you say B is mentioned in the passage. Let's go look at it. ये यहाँ पे mentioned है, in those fields of art which concern themselves with ideas as well as with sensations, it is almost impossible to find any trace of an artist who is not actively and hostile to his environment and thus an indifferent patriot. Now, if you have chosen this just because paraphrase paragraph से ऐसा का ऐसा phrase group of words उठा के यहाँ use किया गया है, that an artist who was not actively hostile to this environment. So, frankly speaking, this is a specific, mention with respect to those arts which which deal with ideas as well as with sensation. So, ये specific है. और अगर मैं अपना option देखती हूँ, which is, sorry, option देखती हूँ, it is saying in general, artists are not actively hostile. So actually बोल रहा है, अगर उस context में देखते हैं, it is impossible to find an artist who is not actively hostile. इसका मतलब है वो hostile है और वो भी specific art को लेके दिया गया. ये तो in general के लिए बोला हुआ है. So this cannot be true. Chetan, is it clear now? It is saying are not actively hostile and it is the passage में बोल रहा है impossible to find someone who is not actively hostile. इसका मतलब है actively hostile है. But वो again is limited to a particular kind of art. असाद कौन से लिए YC पूछ रहे हो? Chetan, first you answer. Is it clear now? Beware of any option that is paraphrased. पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि पैराग्राफ से ऐसे के ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स उठा दिए, वो कंफ्यूजन के लिए रहेगा. आपको लगेगा पैसेज में ये पढ़ा है तो ये भी मार्क होता है. आपको ये समझने की जरूरत रहेगी वो पैसेज में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं. अविरल 2 on 5 not acceptable. This is worrisome. जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है आपको. आपको बोला गया है पढ़ो. आप पढ़ के पूरा एक बार में ध्यान से पढ़ के सॉल्व करोगे क्वेश्चंस. रिग्रेशन की जरूरत कम पड़ेगी
और किसी क्वेश्चन के लिए रिग्रेशन भी करना रहा, क्योंकि वो पढ़ते टाइम आपके पास वो मैप बन चुका है, मेंटल मैप ऑफ द पैसेज, यू विल नो वेयर टू गो टू क्लैरिफाई इट. ठीक है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. Chalo, let's go to the next one. Now, this is a passage that everybody is comfortable with. करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है. अप्रैल एक्ट इतना भी पुराना नहीं है, एंड इस चीज पे आपके पास कंट्रोवर्सी भी बन चुकी है, काफी सारा न्यूज कवरेज भी हो चुका है. सो समथिंग दैट यू हैव रेड. सो एट द मोस्ट इफ आई हैड टू टेक इट, इट वुड हैव बीन द थीम इज पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी. ठीक, chalo, let's look at it. Which of the following can be the central idea of the passage? Now, this again is something that is pretty easy. ये passage पढ़ने में easy है. Options काफी हद तक डायरेक्ट है. एक दो में कंफ्यूजन हो सकता है, एक दो क्वेश्चंस के एक दो ऑप्शंस में हो सकता है, अदरवाइज नो. Now, let's look at the thing. The access to English language for the backward population of the country will empower them to enjoy better education. Seems like it, इसके बारे में बात हुई है. B says, the assessment in Hindi language for the backward population of India could empower them. ये तो गलत हो गया, वहां पे इंग्लिश को ही स्ट्रेस दिया है, B हटा दिया. राइट. C says the excess of English language, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की अति, तो यहाँ पे ध्यान जाता, ऐसे भी क्लियर हो जाता. सी भी एलिमिनेट हुआ. डी सेज द सक्सेस टू इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द अदर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल. सक्सेस टू नहीं ना, अभी तक उनको इंग्लिश नहीं पढ़ने को मिल रही है, तो अगर उनको इंग्लिश पढ़ने मिलेगी तब होगा, तो सक्सेस तो तब होगा जब मिलेगी. तो सक्सेस यहाँ पे इनकरेक्टली यूज है. इट शुड बी हैविंग एक्सेस टू, हेंस आंसर इज गोइंग टू बी ए. तो यहां तक देखते हैं, देयर आर 6 क्वेश्चंस. पहले वाले मान लेते हैं कि 4 on 5 है या 5 on 5 है. सो दिस शुड बी बेसिकली 5 on 6 और 6 on 6. मैं साथ साथ स्कोरिंग करते जा रही हूँ, बिकॉज आइडियली स्पीकिंग अगर आपको एक्सेलेंट स्कोर चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, द एक्सेलेंट स्कोर वुड हैव बीन 25 to 28. Now, why do I say 25 to 28? Because the passages and the options were very easy. The passages were quite easy to read. एक में आपको जरूर दिक्कत हो सकती थी, बाकी के 5 passages जो है वो काफी easy थे. So that one particular passage can be on the difficult side. So that is the reason 25 अगर मान लेते हमने वो 5 questions नहीं किए हैं, तो 5 माइनस कर दीजिए आप. बाकी के करेक्ट हुए तो कम से कम 25 तो आना ही चाहिए, राइट. एंड बाकी बचते हैं ये, तो उसमें आपके 2-3 करेक्ट हो जाते हैं, तो 28 हो गया. सो 25 to 28 score will be excellent. And anything between 20 to 24 will be considered good. उसके नीचे इतना प्रैक्टिस करके कम से कम 20 प्लस तो आपका स्कोर होना चाहिए. बट जो नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन योर टाइम मैनेजमेंट. आई फाइंड दैट विथ मेजॉरिटी ऑफ यू टाइम मैनेजमेंट इज द इशू. आप टाइम नहीं मैनेज कर पाते हो तो इंग्लिश आते आते तक रीडिंग फटीग हो जाती है आपको. So you need to now spread out, play very smart in terms of which to solve when. Chalo, going on to the next question. 7 says, which of the following can't be inferred, cannot be inferred, right? So if I look at it, A says only access to English language can help with the progress of the productive part of the population. ये इन्फर कर सकते हैं बिकॉज इसी के बारे में बात हुई है, राइट. बी सेज द ऑथर इज कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मेकिंग हिंदी द नेशनल लैंग्वेज. कैन दिस बी इन्फर्ड? कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मेकिंग हिंदी द नेशनल लैंग्वेज. And C says the author advocates for the rights of the backward part of India since he himself suffered the consequence. ये कहीं से भी क्लियर नहीं हो रहा है whether he has suffered or not. ये नहीं हो सकता.
This cannot be inferred. Now, B, let's go back to the passage and check. The author is completely against the idea of making Hindi the national language. Now, if I look at the option B, it can be inferred from the first few lines of the passage itself, where he says that that Hindi must be spoken by people in all of India states instead of English will undermine development and foster a regressive brand of nationalism. Nationalist has no meaning if all children do not get equal language education from class 1 to 12. So this is something that can be inferred. Hence, answer is going to be C. This is something that it cannot be inferred. क्या author himself suffer किया है क्या language domination का we don't know. Yes, it has been mentioned, बच्चा. Mention किया हुआ है. Let's go to the passage. यहाँ चल के उनका हो रहा है ना शुरू. यहाँ पे दो बोला है इन एनी लैंग्वेज ना हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है एनी लैंग्वेज के पार्ट में राइट For Shudras, this means having access to education in English if they want to catch up with the English educated Dvijas. Shudra formed the lifeblood of the nation from the ancient post-Vedya and so on. When later began to be burning notions of for survival, the career holds lessons for India to expand planets. Now it is critical that children be educated in English. यहाँ पे सिर्फ English की बात हुई है और कोई language की बात नहीं हुई है. Especially when it comes to backward classes. Hence, it is only English. Is it clear? अनमोल, रुनित, ऋषिका, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की ही बात आई हुई. Are not educated in English, they will continue to be exploited. Only English educated Dvijas will get. The only way out, therefore, is that English must become the medium for national education in India. Only English. Is it clear now? Anmol, Runit, Rishika, please reply quickly. Chalo, going on to the next one. Eighth one, choose the most suitable title for the passage. India's decision to make Hindi the national language? Definitely no. Access to English and progress? Seems like it. India's literacy problem? या कहीं भी literacy problem की बात नहीं हुई है. Accountability of the educated? वो कहीं भी नहीं बोल रहे हैं. जो educated है उनको accountable करो. वो definitely बोल रहे हैं. अगर backward classes को English language के थ्रू पढ़ाओगे तो progress ज़्यादा अच्छा रहेगा. Hence answer is going to be B. So here so far it should be 7 on 8 or 8 on 8. This is for excellent. जो इससे कम है they should be either 6 on 8 or 6 on 7. Vanita, I just mentioned where option 1 can be inferred. Is it clear or not? Please respond quickly, Dvanit. And please excuse me for my coughing. Let's go to the next one. Ninth one. Which has been mentioned as the lifeblood of the nation? Is it the Shudra? Dvijas तो नहीं है ना? द्विजा तो mention द्विजाज नहीं है, right? Lifeblood के context में बात नहीं हुई है. So आदिवासी भी नहीं. So it can either be Shudra or Dalit. I did have a cup of water. Thank you so much, Dhruv. Now, answer is either A or C. So let's go back. यहाँ पे lifeblood
literally mentioned hai. So let's look at that particular part where it is saying that they are lifeblood. I'm sorry. Shudras form the lifeblood of the nation. शूद्र में directly mentioned. This is a direct question. अब इसको तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, right? So यहाँ पे 8 on 8, 9 on 9 और 8 on 9 यहाँ तक excellent है. इससे जो कम रहेगा एक एक point that becomes in your category of good. Chalo, let's go to the next one. I hope everybody got this correct. 10th one says, which of the following can be inferred from the passage? Can be inferred. Infer kar sakte hain. So if I look at the first one, which says that if a productive person gets education in English and knows the language well, the chances are that he may not get exploited regardless of the sect he is from. This is something that can be inferred, but मेरे पास both A and B है, but D तो eliminate हो गए हैं यहाँ पे, directly eliminated, right? Now let's look at ये होगा कि नहीं. If 1/2 of the population of a certain group of people in a society get educated, they'll help in educating others who are not educated to maintain an equal standing. ये कहीं भी mention नहीं है. Hence answer is going to be A. Now I hope you have no doubts ये कहाँ से infer किया गया है. वो एक exploited वाली line definitely इन्होंने use की हुई है. If India's productive masses are not educated in English, they will continue to be exploited. So this is something इससे infer कर सकते हैं कि अगर उनको इंग्लिश में एजुकेट करोगे तो उनका exploitation नहीं होगा. Thank you so much, Vrinda. So यहाँ तक देखते हैं 9 on 9, 10 on 10, 9 on 10. This is excellent category. इससे अगर एक एक कम कर देते हैं that comes in the good category. ठीक. Now this passage was easy. और आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी करेक्ट होना चाहिए था जिसमें कि ओनली वर्ड यूज हुआ है. अगर आपने ध्यान से पैसेज पढ़ा होता तो आपको समझ में आ जाता. वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा है. उनको इंग्लिश में दो, इंग्लिश की एजुकेशन दो, इंग्लिश की एजुकेशन दो, इंग्लिश की एजुकेशन दो. दैट वाज समथिंग दैट वाज रिपीटेड थ्रू आउट. सो दैट means that the author is trying to say that education only in English medium is going to help them. Dhvanit, you need to start practicing. Dilli dur nahi hai. And you know, when I say Dilli dur nahi hai, physical distance की बात नहीं कर रही. I'm talking about CLAT. You'll have to, buckle up and start performing. Okay. Now, this is very interesting passage. This is psychology का हिस्सा है. But ये जिस तरीके से लिखा गया है इट इज क्वाइट इजी टू रीड. इट्स नॉट डिफिकल्ट. यहाँ इतने टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं हुए हैं. अगर ये साइकोलॉजी का पैसेज रहता और यहाँ पे फिर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स रहते देन दैट वुड हैव गॉन इन द मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी. बट दिस वाज बेसिकली easy to moderate for those who have not been reading different kind of written material or have not been solving different kind of passages. उनके लिए moderate रहता है. जो करते आए हैं this goes in the easy category. So let's look at it. Sorry. Which among the following can be inferred from the passage? First one says that we are more likely to believe what our friends tell us. Is that true? It doesn't seem so. Believing in fake news gives us a sense of validation and control when it aligns with our views. Definitely yes, mentioned hai. Fake news spruced up entertainment in harrowing times. हाँ, ये भी mentioned hai. So hence answer is going to be B. 2 and 3. तो यहाँ आते आते आपका स्कोर हो गया 10 on 11, 9 on 10 और 11 on 11.
ठीक. I hope there was no doubt. Here again, this particular question was quite easy. So let's look at the 12th one. When the author uses the word takes precedent, what does he mean? Now यहाँ पे आता है take precedence का मतलब क्या होता है? Now you are CLAT students, तो आपको precedence का meaning पता होगा. आपको पता ही है ना, जजेस जब भी कोई केस का डिसीजन लेते हैं, they check for the precedents कि इस टाइप के क्राइम के लिए पहले किस टाइप की सजा मिली हुई है. जिस कारण से कि किसी ने चोरी किया तो चलो उसको फांसी लगा दो. नो. सो दे बेसिकली चेक कि इस टाइप की चोरी के लिए पहले क्या उनको सजा दी गई है, उसके लाइंस पे वो डिसाइड करते हैं. सो दे चेक फॉर द प्रेसिडेंट, राइट. नाउ अगर यहाँ पे बोल रही हूँ टेक प्रेसिडेंस, इसका मतलब क्या आ रहा है? एज इन पहले आना, राइट. समथिंग दैट कम्स बिफोर वाला कॉन्टेक्स्ट है. फोरगो मतलब जाने देना, letting it go kind of thing है. Preponderate is significant या importance वाला ये नहीं होगा. Finesse is नहीं आएगा. So what is left is antecede. Anti मतलब पहले seed is आना. So antecede is again something that comes before. Hence it can replace the word takes precedence. So यहाँ तक आ गए अपन 11 on 12. 10 on 11 और 12 on 12. This is excellent. इससे एक एक कम करोगे तो आपके गुड वाले स्कोर्स आएंगे. यस ध्वनित, क्या लिख के डिलीट कर रहे हो तुम? Now 13th question, which among the following weakens the author's argument in the passage? Now this is again quite an interesting question that they have asked that ये किस में इनमें से कौन सी चीज वीकन करेगी ऑथर के आर्ग्यूमेंट को. सो अगर देखते हैं author's argument is that people have started accepting even the fake news, right? तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो A says many people are recalcitrant towards using their brains analytical. Recalcitrant मतलब रेजिस्टिंग अथॉरिटी, नहीं करना चाहते हैं. तो यहाँ तो कहीं मेंशन नहीं है कि वो ब्रेन का एनालिटिकल पावर यूज नहीं करना चाहते हैं. और दूसरा चीज ये होगा कि ये सपोर्ट करेगा, वीकन नहीं करेगा. तो दिस कैन नॉट बी माय आंसर. B says we are more susceptible to agreeing with the fake news if it substantiates our held beliefs. Of course, this is what the author has said. ये भी वीकन नहीं कर रहा. बाकी बचता है C और D. We should not rely on any news even if it aligns with our held beliefs. Or D, we tend to pine for activities in our lives even if distressing once we lose the freedom to do them. Now, if I look at this particular option C, ये कह रहा है कि मत रिलाय करो even if it aligns with your already held beliefs. ये तो ऑथर जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट जा रहा है, right? So this is something that is going to weaken, hence answer is going to be C. So far it's either 11 on 12, 12 on 12 or 13, 12 on 13 or 13 on 13. Please excuse me. Now, let's go to the next question. Question number 14. What is the tone of the author in the passage? ये बड़ा सिंपल सा पैसेज था. आप ये टोन बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए. इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल पैसेज वेयर आपको वो अगर स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज देखते हैं आपको इजीली समझ में आ जाता कि ये किस टाइप का पैसेज है. नाउ जस्ट फॉर केस, truculent means somebody who is quick to fight or quick to get angry or quick to get irritated. तो वो कॉन्टेक्स्ट तो है ही नहीं ऑथर का, नहीं है. demeaning तो है नहीं. बाकी बचता B और C. The point is, is the author praising anything? No, he is not. नहीं, वो है
एनालिटिकल है. वो एनालिटिकल क्यों है? सो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग इज दैट ही इज गिविंग आर्ग्यूमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन एविडेंस, और उसका जो ओपिनियन है वो भी रिसर्च पर बेस्ड है. हेंस दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एनालिटिकल. अविरल कोविड नहीं है. कोविड रहता तो आई वुडंट हैव बीन स्टैंडिंग हियर आराम से. कुछ भी पूछते हो अविरल. It was viral and I'm almost recovered. Chalo, let's go to the 15th question. Which among the following can be a suitable title to the passage? So I have fake news and its implications. So definitely fake news की तो बात हुई है, but उसके implication की बात नहीं है. But ये जरूर बोल रहा है कि हम fake news कैसे और क्यों believe करते हैं. ध्रुव कहाँ से वो नीचा दिखा रहा है? What is he? किसको नीचा दिखा रहा है वो? Is he demeaning somebody's idea? Is he demeaning somebody? किसी पर्सन को नीचा दिखा रहा है, किसी पर्सन के आइडिया को नीचा दिखा रहा है. वो तो बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है फेक न्यूज पे क्यों बिलीव करते हैं. वो एविडेंस दे रहा है जिसके बेसिस पे अपना आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर रहा है. वो ओपिनियन दे रहा है जिसके जिसके पीछे की उसका रिसर्च है. सो दिस कैन नॉट बी योर डिमीनिंग टोन. I hope you know the meaning of the word demean. Chalo. Be even the most intelligent person may have believed in fake news. नहीं, उसके बाद बात नहीं हो रही. How to detect fake news ये भी नहीं हो रही. So what is left is D. Unless the thing is that people are inclined. People are inclined इन बिलीविंग इन फेक न्यूज. दैट इज व्हाट बोल रहे हैं ना. इंक्लिनेशन की बात हो रही है. हमारी पहले से बिलीफ है तो वो बायस फॉर्म कर रही है. सो दैट इज लीडिंग टू एन इंक्लिनेशन फॉर पीपल टू बिलीव अ सर्टेन फेक न्यूज. और उसी के कॉन्टेक्स्ट में थ्रू आउट पैसेज में बात हुआ है. हेंस आंसर इज गोइंग टू बी डी. सो फार 13 on 14, 14 on 14, 15 on 15 and 13 on 15 comes in excellent category. इससे अगर एक एक पॉइंट नीचे जाता है then that will be your good category. Now Dhruv, is it clear? Aviral, is your doubt about my having COVID solved? और ध्वनित मैसेज टाइप करके रिट्रैक्ट करता है. चलो कोई ना. सो अभी तक सब हैं. Are you in the category of good or excellent? Yes, Dhruv, they don't know that they don't know the fake news, and the point is, why do they don't know that the news is fake? Thank you, Abel. हाँ ध्रुव, क्लियर हुआ क्या? The dilemma is that people don't know that they don't know about fake news, but the passage is about why do people don't know that they don't know why it is fake news. Clear, Dhruv? The author has given quite research-based evidence to show that why people do that. Chalo, going on to the next one. Passage 4 is something that could have put a brake on your speed. ये है philosophy. This is on philosophy, no doubts about it. Because it is talking about taking a line, cutting it into two equal parts and dividing them again into each. Then, the sphere of the intellectual is to be divided. In what manner? So there are two subdivisions. In the lower, or which the soul uses the figures given by the former divisions as images. The inquiry can only be hypothetical. Instead of going upwards to a principle, descends to the other end. In the higher of the two, the soul passes out of hypothesis and goes up to a principle which
is above hypothesis, making no use of images as in the former case, but proceeding only in and through the ideas themselves. यहाँ आगे गाड़ी अटकती है, स्पीड अटकती है, ब्रेक लगाना पड़ता है, यहाँ जाके आपका you know it if you sit down to solve this kind of passage first, you are going to get stuck here, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट हो सकता है. तो जब आप सॉल्व कर रहे हैं और अपने को पता है सारे सॉल्व करने ही है 25 मिनट्स में, बट इसमें चांस है कि ज्यादा टाइम लग सकता है. तो ये इस टाइप का पैसेज जो कि फिलॉसफी पे और वो चीज को हर चीज को किसी और चीज से क्या बोलेंगे, वो आपको इमेजिन करने को बोल रहा है. अगर ये लाइन के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके दिमाग में इंटेलेक्चुअल के साथ ये होगा. सो बेसिकली वो आपको कोई कुछ चीजों को इमेजिन करने को बोल रहा है, राइट? एक चीज से दूसरी चीज पे ले जा रहा है. So इस type के passages get time consuming because they cut down on my speed. And another thing is that I should solve such kind of passage at the end. तो आप जब इंट्रासेक्शनल सीक्वेंसिंग करते हैं, इस टाइप के पैसेज आप आखिरी के लिए रखिए, ठीक है? So, but since we are going to discuss this and we are going to solve this, let's come back. So question number 16 says, consider the statement. Take a line which has been cut into two unequal parts and divide each of them again in the same proportion, and suppose the two main divisions to answer, one to the visible and the other to the intelligible, and then compare the subdivisions in respect of their clearness and want of clearness, and you will find that the first section in the sphere of the visible consists of images. सांस ले लो अब, ठीक है? नाउ लाइन लो, उसको दो अनइक्वल पार्ट्स में कट करो, फिर वो दो लाइंस जो कटी हुई हो वो अनइक्वल पार्ट्स में, उनको फिर से उसी प्रोपोर्शन में आप काटो, ठीक है? और उसके बाद एक को विजिबल कैटेगरी में रखो, दूसरे को इंटेलिजिबल, दैट मीन्स समथिंग दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, ठीक है? एंड देन कंपेयर द सब डिविजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लियरनेस और एंड वांट ऑफ क्लियरनेस, मतलब कौन क्लियर है और किसको क्लैरिटी की जरूरत है. एंड यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट सेक्शन इन द स्फीयर ऑफ द विजिबल कंसिस्ट्स ऑफ इमेजेस. सो दैट इज गोइंग टू बी क्लियर वाला पार्ट होता है. तो ये जो कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग? इज ही पर्सोनिफाइंग एनीथिंग? नो. Is he giving an allusion? You know what allude karna, allusion karna, that means you're referring to, you're giving a reference of something else. In a way, yes, but not really. But रखते हैं इस ऑप्शन को. सिमिली तो है नहीं, इमेजरी. बट यहाँ पे अगर देखते हो, सो ये बोल रहा है वन टू द विजिबल, द अदर टू द इंटेलिजिबल. तो आपको ये इमेजिन करने को बोल रहा है ना, वो डायरेक्ट एल्यूजन नहीं दे रहा है. यहां तक तो जो है उसने इमेजरी का यूज किया है. इमेजिन करो, आप दिमाग में उस चीज को कर रहे हो ना. सब डिविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लियरनेस एंड वांट ऑफ क्लियरनेस, एंड यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट सेक्शन इन द स्फीयर ऑफ द विजिबल कंसिस्ट ऑफ इमेजेस. तो ये सब आपको दिमाग में ये देखने को बोल रहा है. हेंस आंसर इज गोइंग टू बी इमेजरी. चलो, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? It is not didactic. Eerie will mean something that is strange. वो भले ही आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट ये अपने आप में अगर टोन देखेंगे, इट इज नॉट स्ट्रेंज. सो दैट इज लेफ्ट इज इंफॉर्मेटिव एंड नरेटिव. तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है? नहीं, वो एक हर चीज के लिए वो एक डायलॉग टाइप की चीज चल रही है. मैं ये प्लेटो ने ये बोला, उसने उसके शिष्य ने ये पूछा, एंड सो ऑन. सो हेंस आंसर इज गोइंग टू बी, सॉरी, आंसर इज गोइंग टू बी नरेटिव. आंसर इज नरेटिव बिकॉज ये डायलॉग की तरह दिया गया ना, दैट टू पर्सन्स टॉकिंग एंड वन इज सेइंग, वन इज एक्सप्लेनिंग एंड द अदर मोस्ट लाइकली द डिसाइपल और द स्टूडेंट इज आस्किंग क्वेश्चन. तो यहां तक आके देखते 16 चांसेस हैं गलत हुए होंगे. तो ओवरऑल यहां तक आते आते 15 on 17, 15 on 16, 16 on 16,
and 17 on 17 और 16 on 17. यहां तक अच्छा चल रहा है. ठीक है, चलो, going on to the next one. 18th one, which of the following best conveys the idea of the passage? तो यहाँ आता है मजा कि यहाँ पे कौन सी चीज पैसेज का आइडिया कन्वे कर रहा है. So in a way, it is asking us to identify the theme or the central idea. So let's look at it. There are restrictions in physical objects that takes into account of hypothesis, seems like it. It is always here to define a thin line difference between visible and invisible. No, वो just example था. The conversation, अगर B नहीं है तो D तो होगा नहीं. C says the conversation is definitive to the core difference between visible and intelligible. No. ये पूरा का पूरा जो रामायण लिखा गया ये बताने के लिए लिखा गया है कि जहाँ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को लेके जहाँ कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन आती है, इन दैट केस हाइपोथेसिस को अकाउंट में लिया जाता है. वो सारा का सारा जो उसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है वो कटिंग द लाइन एंड ऑल, तो इट्स टॉकिंग अबाउट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस इन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. ऐसे केस पे देन यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द हाइपोथेसिस. तो ये चांसेस है या तो सॉल्व किया ही नहीं है या ये इनकरेक्ट हुआ है. सो फार इट्स लाइक आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस 3 इनकरेक्ट तक ठीक है, 4 मैक्स अलाउ. ठीक है, इफ यू हैव सॉल्व्ड ऑल 18. ठीक, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. In the sentence, by images I mean in the first place shadows, and in the second place reflections in water, and in solid, smooth, and polished bodies, and the like. Okay. What is the implied meaning of shadow and reflection, respectively? Now, let's see where this particular thing has been used. So, we are going to the passage. No, Dhruv, that is just an example that the author has taken, visible and intelligible ka. That is not the main idea. That is just an example the author has taken. Okay. And by images, यहाँ पे आ रहा है. And by images, I mean in the first place, shadows, and in the second place, reflections in water, and in solid, smooth, polished bodies, and the like. So take a line which has been cut and so on. So one to the visible and other to the intelligible, and then compare the subdivisions in respect of their clearness and want of clearness. And you will find that the first section in the sphere of the visible consists of images. So images, shadows, reflection in water. So let's go to the passage where it is talking about this. Imagine now the other section of which this is only the resemblance to include the animals which we see and everything that grows or is made. Now, would you not admit that both the sections of this division have different degrees of truth and that the copy is to the original as the sphere of opinion is to the sphere of knowledge? यहाँ जाके मुझे आंसर मिल रहा है. Right? So let's go to the question again. Okay. So by images I mean shadows, right? In second place reflections. तो shadow और reflection किसके लिए use हुआ? Reflection उसने साफ तौर पे कहा हुआ है, it is opinion, तो opinion वाला ये है. Hence answer is going to be A, shade and opinion. So जहां आगे चल के mark किया था paragraph first page के आखिरी में, that is where you get your answer.
Now, how this is a dark area or shape that is produced by an object is called the shade. ठीक है, और आगे चल के ये बोल रहा है रिफ्लेक्शन इज समथिंग दैट इज स्टैंडिंग फॉर द इंटेलिजिबल, राइट? सो दैट विल मेक दैट ओपिनियन जो है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है, हेंस दैट बिकम्स माय ओपिनियन. आइडिया एंड डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन की बात नहीं हुई है अनमोल. Where do I get that it is talking about deliberation? There is definitely an aspect of opinion, but not of deliberation. What is deliberation? Again, let's go to the passage. Now, visible is something that is going to consider shadows. That means it will be the shape of that particular object, जो कि यहाँ context में clear हो रहा है, right? Reflection in the water and smooth polish and the like, right? The second, and in the second place. And by images, in the first place, I mean shadows, and in the second place, I mean reflections, right? Now, ye dekho, would you not admit that both the sections of this division have different degrees of truth? That the copy is to the original as the sphere of opinion is to the sphere of knowledge. Chalo, let's go to the next one. 20 says which of the following would be a suitable title of the passage? Should science be considered an art? Am I intelligent? Definitely ये नहीं होगा. उसका टाइटल इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया, वो नहीं है. यहाँ पे कहीं भी आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हुए. कैन साइंस बी द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस की भी बात नहीं हुई. हेंस आंसर इज गोइंग टू बी डी. सबसे अच्छे टाइटल रहते हैं ना डी वाले, नन ऑफ द अबव. दे मेक द बेस्ट टाइटल. कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं. साइंस एंड आर्ट नहीं, बात नहीं हुई है. इंटेलिजेंस बात नहीं हुई है. आंसर टू ऑल क्वेश्चंस उसके बारे में भी बात नहीं हुई है. सो व्हाट इज लेफ्ट इज योर आंसर, नन ऑफ दीज. चलो, तो 20 तक आते आते मोस्ट लाइकली 18 सॉल्व किए होंगे, कोई ना कोई एक रह गया होगा या नहीं किया होगा, बिकॉज यू कुड नॉट इवन एलिमिनेट ऑप्शंस एंड कम टू 2. आपको पहले भी कहा हुआ है, रिस्क लेना है तो आप तब लोगे जब आपके दो ऑप्शंस डेफिनेटली फैक्चुअली एलिमिनेट हो रहे हैं. बाकी बचते दो, वहां पे आप रिस्क लेके एक मार्क कर सकते हो. बट आपके पास दो भी ऑप्शन नहीं हो रहे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज लेट गो, या मोस्ट ऑफ यू में जस्ट रैंडमली मार्क इट. ठीक है, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग में जाए. मान के चलते कुछ सेफ प्लेयर्स हैं, शायद उन्होंने दो सॉल्व नहीं कर पाए, शायद टाइम नहीं था, या दे वर नॉट कॉन्फिडेंट, सो 18 सॉल्व किए. तो 18 में से as long as you have scored 16 and 17, that is pretty good. You have solved all 20, then so far if you've scored or you got 18 or 19 correct, excellent. And more shade is vague in context. बच्चा फिर डेलिब्रेशन कैसे होगा? टेल मी ध्रुव, हाउ कैन इट बी डेलिब्रेशन? वेग नहीं है बच्चा, शेड दिया गया है ना पैसेज में. शैडोज
The copy is to the original. यहाँ पे basically इन्होंने parallel comparison किया हुआ है. Copy is to original as opinion is to knowledge. No बच्चा, shade दिया गया है by images in the first place, and by images I mean shadows. Shadows would mean having something that is visible. एक ऑब्जेक्ट है फिजिकल, उसकी शैडो है, शेड है. ठीक है. तो यहाँ पे शेड जो बोल रहे हैं आप उसको दो कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो. द यू, द कलर वाला शेड, यू नो. No, Dhruv, again, I'll not be spending a lot of time on this discussion because there are other passages to be covered. ये देखो, let me reiterate what I understood. तो क्या समझाना चाहते थे? That physical form of the objects has some limitations, whereas in intelligible you look beyond the physical form. Just as in science, geometry, and sister arts, etc., it considers the hypothesis of physical object, whereas in poetry or theory to look beyond the obvious. ये आपका मेन आइडिया है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स जो प्लेटो ने यूज किए हैं ये समझाने के लिए किया हुआ है. लेट मी रीएटरेट व्हाट आई अंडरस्टूड. मैंने क्या समझा? मैं मेन पॉइंट ही तो समझूंगी ना. वो एग्जाम्पल जितने भी यूज हुए वो भी सारे मेन पॉइंट समझाने के लिए यूज हुए. And besides that, if you have doubt, Dhruv, you can always get in touch with me. Going on to the next one. Chalo. Now this is interesting. Again, it's kind of, करंट अफेयर्स टाइप की चीज हो गई है, कंटेम्प्ररी है टॉपिक, क्योंकि आजकल इंडिया में और स्पेशली इंदौर में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफी फैसिलिटीज दी जा रही है. एंड ओवरऑल इन इंडिया, entrepreneurship is something that is, everybody thinks that this is something that is going to get us economic prosperity. So this is somewhere management कह लो आप इसको, या entrepreneurship के context में ले लो. So it is management and entrepreneurship. So let's go. Again, not a difficult passage at all. Let's go. 21. What does the author mean by esoteric truths in the passage? अब यहाँ पे बात हो रही है esoteric truths. ठीक है. अगर मुझे मान लो esoteric का meaning नहीं पता है, so how can I make that out? Let's go. In exchange, they experience strong feelings of belonging and maybe get access to esoteric truths denied to the ordinary people. Ordinary लोगों को जो नहीं पता है, जो सिर्फ कुछ सिलेक्ट लोगों को पता है, वो कहलाएंगी esoteric. यहां से तो इतना तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो ही रहा है, right? So let's go and look at the options. The absolute truths, तो सबको पता होने चाहिए. Eliminate. Then comes work and thought dedicated to the growth of the startup, like expansion ideas, marketing ideas. Again, this is something that is, ले सकते हो. सिर्फ शायद मैनेजमेंट के लोगों को पता होगा तो can be kept as an option right now. Part of life that is not relevant, definitely not. D, the truths of an organization, like technology used in organization, secrets of the business, and those outsiders cannot know. तो ये मेरा आंसर हो रहा है. esoteric truths, not, or the truths that are denied to other people. अब यहाँ पे other people को नहीं मिल रहा है, ये connotation नहीं आ रहा है. Hence answer is going to be D.
Let's go to the next one. 22. What increases the risk of factional strife in startups? Right now, देखते हैं. One says because roles in startup aren't specifically determined, increasing competition in each role. ये definitely करेगा. 2 says because internal conflict is higher as there is high competition to earn recognition from the higher ups. ये भी है. एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर्स के कारण आपके फैक्शनल स्ट्राइफ एक कंपनी में तो नहीं होगी. हेंस आंसर शुड बी बी 1 and 2. ये again was something that was quite easy. Let's go to the next one. 23rd. As per your read of the passage, which of the following statement can be considered false? So let's look at it. 23rd is saying that extreme dedication to startup work can lead to mental health issues. ये इन्फर कर सकते हैं क्या? फॉल्स इन्फ्रेंस बोला है. मेरे हिसाब से तो कहीं बोला नहीं है, बट लेट्स कीप इट एनीवे. Startups can be compared with cults. Yes. The business methodology of a startup can look very different. Yes. People working dedicatedly in a startup without a consulting experience could be considered seeking long-term connection. Yes. So something that cannot be inferred or something that is falsely inferred is A. So my answer is going to be A. That कहीं भी ये mental health issues होंगे ये mention नहीं है. Again अगर ये passage ढंग से पढ़ा होता, it's a quite an easy question to answer. 24th, the author compares internal conflict of a startup to autoimmune disease to show what? Do you know what autoimmune diseases are, everyone? Anshika, the CLAT was easy, or you find my explanation to be easy? Now, autoimmune disease is basically आपको कोई डिजीज नहीं रहती है बट आपकी बॉडी उस चीज को क्रिएट करती है. तो ज्यादातर जो एक्जिमा है दैट इज ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड इचिंग जो होती खुजली आती है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो इम्यून डिजीज. ठीक है. सो बेसिकली बाहर का कोई भी चीज आपको उस चीज आपको कोई नुकसान नहीं कर रही, वो आपकी बॉडी है जो वो डिजीज या वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. सो दैट इज व्हाट ऑटो इम्यून डिजीज इज. सो लेट्स लुक एट A. Office conflict is not only detrimental for the employees but it is destructive for the company as well. हाँ बट ये ऑटो इम्यून के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. ऑटो मतलब खुद, इम्यून मतलब हम ही इम्यून हो गए. So basically, I don't have immunity for that particular disease because it is created. मेरी बॉडी क्रिएट कर रही है. इम्यूनिटी के लिए तो मेरी बॉडी उस चीज को फाइट करनी चाहिए, राइट? सो ये मेरा आंसर नहीं है. से बी सेज टू मच कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय ruins a company. Ruins too much competition. रख के देखते हैं. C says internal conflict destroys the company's chances of survival from the inside, which is invisible from the plain view. This is my answer, but let's see D. When a startup has a strong team, it can win against 9 autoimmune disease. Mein. So answer is going to be C. सो जैसे ऑटो इम्यून डिजीज अंदर से होती है और पर्सन को नुकसान करती है, वैसे ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंपनी को अंदर से खोखला करेगी, कंपनी को नुकसान करेगी. इट इज समथिंग दैट इज देयर विद इन द कंपनी एंड कॉजिंग द हार्म टू कंपनी. हेंस आंसर इज गोइंग टू बी सी. So let's look at 25th. What can you infer from the passage about employee loyalty to a startup? Again, a very interesting one. Options अगर देखते हैं तो easy हो जाता है eliminate करना because बाकी सब is they are so close that मैं एक आध कोई कीवर्ड फाइंड कर दूं तो एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा. A says employees involved in seeking long-term relation in a startup team
meaning startup where internal conflict is maximal, are often quiet. No, ये तो नहीं ही होगा. B. Employees involved in seeking long-term relation in a strong startup team, meaning startup where internal conflict is minimum, rarely quit. Absolutely correct. ये मेरा आंसर लग रहा है, but let's look at the next one. Employees involved in seeking long-term relation in a weak startup. No, ये नहीं होगा, यहीं से eliminate हो गया. Employees involved in seeking long-term relation in a strong startup, meaning somewhere internal conflict is minimum, always quit. ये भी गलत हो गया. So my answer is B. Again 25 तक आए. मान लेते हैं आपने सिर्फ 23, 22 सॉल्व किए हैं. 22 on 22 on 22, 23 on 23. बट ये बेसिकली स्कोर जाएगा गुड की तरफ. इसके ऊपर आपके करेक्ट हो रहे हैं, सो दैट पुट्स यू इन द कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंट. Let's go to the last passage now. यहाँ तक I hope there is no doubt. अब इसके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू इवन इन योर स्लीप नाउ बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट क्राइसिस. Right? So it's talking about सॉरी UNFCCC की जो प्रोसेस थी उसको लेके ये बनाया हुआ है. चलो लेट्स गो टू द क्वेश्चन. Which of the following can be inferred from the passage? Can I infer that US is the first country that made an exit from the Paris Pact and now have re-entered it under President Biden? यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि यूएस क्या फर्स्ट कंट्री थी कि नहीं थी. चलो eliminated. B says all the discussions in COP26 have been about the net zero carbon emissions targeted by around 2050. If I look at this particular thing, it's most of them did talk about this, but not all. तो ये extreme हो गया है, इसको eliminate किया. Okay, climate has necessitated joining dots between health and environment. Or D, weather has become unpredictable and the world is suffering an energy crisis. Is it talking about joining the dots between health and environment? No. So what is left is D. Weather has become unpredictable and the world is suffering an energy crisis. Absolutely. Answer is my D one. Now let's go to the next one. Okay, I'll just have a sip of water, sorry. Now, which of the following cannot be considered as commitments have been met by the developed nations except? तो बेसिकली यहाँ पे कैन बी बोलते हैं ना, ये कैनॉट बोल रहा है, एक्सेप्ट बोल रहा है, सो आई विल हैव टू लुक फॉर कैन बी. सो नो, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ध्रुव? दैट डी इज एक्सट्रीम हियर. Please write the question number because otherwise we spend a lot of time, going back and forth, exchanging, comments or texts, explaining which question, which option, and so on. So, financial hai, can it be considered? Yes. Technological? Yes. Emissions? Yes. Answer is all of the above. Okay, 26 में doubt है. How is D extreme, Dhruv? Can you please explain?
बी में ऑल द डिस्कशंस हो रहा है, जबकि पैसेज में क्लियरली बोला है मोस्ट ऑफ द डिस्कशन. सो डज मोस्ट मीन ऑल? Please respond quickly, Dhruv. Chalo, I'm going to the next one. I guess either you have lost the internet connection. Okay. Which of the following is an antonym of credibility? Credibility का मतलब होता है the ability to believe something that can be believed वाला part, right? Acceptability इसका synonym लग रहा है. Reliable तब लगेगा जब आपको उस particular चीज पे विश्वास है, तो this भी synonymous. Veracity is truthfulness, तो ये भी लग रहा है. So it seems that, and it is definitely, antonym is incredibility. Credibility means so there's something that you can believe in. Incredibility will mean something that cannot be believed in. So this was almost a direct question. इसमें अगर बाकी का नहीं भी पता रहता, you would have taken quite correct guess if you had gone with incredibility, even though you don't know the meaning of veracity. अब सिंपल याद रखना, आप ये verdict यूज करते हैं ना लीगल लैंग्वेज में. डिक्ट इज टू स्पीक, वर इज ट्रूथ. तो ये माना जाता है कि जो जज बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो वर इज ऑलवेज फॉर ट्रूथ. So veracity has to do with truthfulness. Let's go to the next one, 29th. Which of the following can be the main idea of the passage? अब आया मजा यहाँ पे main idea का, right? A says the negotiators of the country should be committed to not withdrawing their development space. Interesting. The negotiators of the country should be committed to not withdrawing their development space. ये तो negate कर रहा है ना, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता. B is saying that the world is hoping for an improved outcome from COP26 as there is a critical need to cut GHG emissions. Now it can be or cannot be, the main idea is the issue. Now the point is that it is one of the points that has been mentioned, but it is not the main point. ये supporting point का काम कर रहा है, right? Next आता है, the discussions in COP26 must focus on net zero carbon emission by 2050. Again, अगर option C देखेंगे, this is just one of the supporting points. So what is left is answer D. COP26 should break the deadlock between the developed and developing countries over the future of carbon markets. And this is how the passage has actually started off saying कि कहाँ दिक्कत हो रही है ना? वहां कहाँ दिक्कत हो रही है? यहाँ पे अब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को नेट जीरो कार्बन एमिशन को लेके दे आर एट लॉगर हेड्स, मतलब वो भिड़ गए हैं और दोनों अपना साइड छोड़ना नहीं चाहते. Now, you know the classic example of this particular case would have been an instance where जब कार्बन एमिशंस की बात हो रही थी और कार्बन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, तो चाइना अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो गया था. चाइना इज द मोस्ट बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब और ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है वहां के वो एक्सपोर्ट होते थे हैं यूएस को. ठीक है. नाउ तो बेसिकली वो बन रहा है चाइना में, बट वो एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस को. सो हु आर द यूजर्स? द यूएस इज द यूजर. नाउ यूएस वांटेड दैट एंटायर थिंग टू बी, since China is making it, they should be responsible for carbon emissions. So that was a time when China had stood up against America, and above all, at that particular conference, and that is the only time I remember in the history of climate change that India supported China.
दैट जो यूज कर रहा वो जिम्मेदार रहेगा, जो बना रहा वो नहीं ना। जो बना रहा वो किसके लिए बना रहा, यूजर के लिए। इफ यू आर द वन यूजिंग इट देन यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. So anyway, let's come back. So that was the deadlock, and hence answer is going to be D. Let's go to the last question of this passage. We have what can be the suitable title for the passage. So top politics and climate lag raha hai. Let's look at it. Climate and UN agencies ये भी लग रहा है. Ozone depletion की बात नहीं हो रही है. Savage the earth की बात नहीं हो रही. So basically my answer will be either A or B. Now, frankly speaking, even the politics have been mentioned in the context of developing or developed countries का चल रहा है, but politics उस context में नहीं हुई है. राइट यहाँ पे मेन फोकस क्या है, यूएनएफसीसीसी के बारे में बात हुई है. राइट दैट इज द बेसिकली उनकी एजेंसीज और क्लाइमेट को लेके क्या उनके प्रोसेसेस चल रहे हैं या क्या डिसीजंस चल रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है. हेंस आंसर इज गोइंग टू बी बी. नाउ ऑल 30 सॉल्ट excellent score will be anywhere from 24 to 28, and when I talk about good scores they will be anywhere from 20 to 23. A passage except for that Plato wala passage that is uh, visible and intelligible वाला, उसमें आपने अगर किए होंगे तो 4-5 गलत वहां किए होंगे और करेक्ट हुए होंगे तो कम से कम 2 या 3 करेक्ट हुए होंगे. कीपिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन माइंड, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. And please check where your score lies. If it is less than good, then I would say that you need to look at the approach you are taking in terms of solving the entire CLAT mock CLAT पूरा पेपर कर रहे हो, आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देने की जरूरत रहेगी. ठीक है. And I'm sorry today for coughing a lot and giving a lot of interruptions. Obviously my throat is still a little bit sore, so sorry for that, and I hope you have understood how we have gone about it. So keep up the spirits, keep solving, and be part of Gladiator series because it is definitely going to help you. Have a great evening everyone. Thank you.